In the previous lecture, we have discussed about the transfer of recombinant vector into bacterial cells. In this lecture, we are going to discuss the transfer of recombinant vector that was formed after the ligation into non-bacterial cell like the yeast, fungus, plants, and animal cells. Introduction of DNA or recombinant DNA into non-bacterial cells. Methods of introducing DNA into yeast, fungi, animals, and plants are also needed if these organisms are needed to be used as the host for gene cloning. अगर हम बैक्टीरिया के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म को एज ए होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, then we have to introduce our recombinant vector into that particular host, like the yeast, fungi, animals, and plants. Strictly speaking, these processes are not transformation, as the term has a specific meaning that applies only to uptake of DNA by bacteria. अगर हम बैक्टीरिया के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और होस्ट में recombinant vector को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो that is not the transformation, because transformation are specifically applies only to uptake of the DNA by bacteria. However, molecular biologists now use transformation to describe uptake of DNA by any organisms. आजकल molecular biologists ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के जरिए DNA को अपटेक के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. In general terms, soaking cells in salt is effective only with a few species of bacteria. Like कैल्शियम क्लोराइड से हम ट्रीटमेंट करेंगे, उससे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एफिशिएंट होगा, जो बैक्टीरिया है कंपिटेंट होगा और recombinant vector easily ट्रांसफर हो जाएगा. Although treatment with lithium chloride or the lithium acetate does enhance DNA uptake by yeast cells and is frequently used in the transformation of Saccharomyces cerevisiae. अगर Saccharomyces cerevisiae में अगर हम डीएनए को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने लिथियम क्लोराइड और लिथियम एसीटेट के साथ ट्रीट करना होगा. लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम एसीटेट मेक द Saccharomyces cerevisiae yeast competent for the transfer of the DNA or for the uptake of the DNA. However, for most higher organisms, more sophisticated methods are used. जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए हमने सोफिस्टिकेटेड और स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल करना है, लाइक द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द हायर फंजाई यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ recombinant vector. In higher organisms, the transfer of the recombinant or the desired gene use different techniques. Plants and animals may use different techniques, and some techniques are specific to the plants, some techniques are specific to the animals, and some techniques can be used both in plants and animals. Here we will look at the detail of each technique that are specific for the plants, for the animals, and for other techniques that can be used for both plants and animals. The first technique that is used for the transfer of the gene of interest into the plants, that is the Agrobacterium Tumefaciens-mediated plant transformation. Gene that is going to be transferred, or our desired gene, is inserted in the TI plasmid. TI plasmid is the plasmid that mainly found in the Agrobacterium tumefaciens. Now this plasmid is called recombinant plasmid because it has our desired gene. We transfer this recombinant plasmid into the bacteria by the transformation. This Agrobacterium tumefaciens bacterium contain our desired plasmid having desired gene, a recombinant plasmid having desired gene. Now this bacteria is transformed bacteria introduce plasmid into the plant cell. अब जब इसको हम प्लांट की कॉलोनीज के साथ इसको हम मिक्स करेंगे, इसको इनॉकुलेट करेंगे, तो ये जो ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है वो अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देगा प्लांट सेल्स में. जब प्लांट सेल्स में प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, देन the DNA will insert, our desired gene will insert in the DNA. Inside the plant cell, Agrobacterium tumefaciens inserts part of its DNA into the host cell's chromosome. Then the plantlet will form the complete plant having our gene of interest, that is the complete plant generated from the transformed cells. तो इन समरी हम कह सकते हैं कि हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया टीआई प्लाज्मिड में, टीआई प्लाज्मिड को हमने ट्रांसफर किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस को हमने इन्फेक्ट करवाया प्लांट्स को इन कल्चर, और प्लांट्स में जो इन कल्चर में जब हमने प्लांट को ग्रो किया, तो
उसमें जो आपने बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म किया, तो बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड था जिसके पास डिजायर जीन मौजूद है, उसने प्लांट में ट्रांसफर किया। अब जब प्लांट ग्रो होगा तो वो प्लांट रिकम्बिनेंट प्लांट होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, हैविंग अवर डिजायर जीन। So this is the method of the transformation mediated by Agrobacterium tumefaciens. Second method that is used in the plants is the protoplast based transformation. Protoplast is the part or the cell having no cell wall. जब सेल किसी सेल में सेल वॉल नहीं होगी, जब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में चूंकि सेल वॉल नहीं है, उसमें डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम इजीली अपना जो डिजायर जीन है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्स एडवांटेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लास्ट। Protoplasts in solution fuse at low but significant rate. The addition of polyethylene glycol increases the frequency of the fusion. जब हम पॉलीथीलीन ग्लाइकोल ऐड करेंगे उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ये दो प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो सकते हैं और हमारा प्रोटोप्लास्ट डिजायर जीन भी फ्यूज हो सकता है। दिस मेथड इज स्पेशली वैल्यूएबल इन जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड एल्गल सेल्स। Transformation of the plant protoplast. Plant having the complete cell wall, nucleus and the vacuoles. Cell wall is degraded. When there is no cell wall, the cell is called the protoplast. The entry of the DNA, our desired gene, when we fuse this gene on the membrane and treat it with the PEG, polyethylene glycol, then our desired gene will transfer inside this cytoplasm. ये transfer हो जाएगा. Now this is called the transformed plant cells. And when we remove the cell wall degrading enzymes or the components, then the plant reform its cell wall. Then the plant regenerate into plants having the our desired gene, that is called the transformed plants. So ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के साथ हम डायरेक्ट अपने जीन को फ्यूज करेंगे, पॉलीथीलीन ग्लाइकोल से ट्रीट करेंगे और हमारा जीन इंसर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म सेल वॉल दोबारा रिफॉर्म होगी और प्लांट रीजनरेट होगा, हैविंग अवर डिजायर्ड जीन। Next technique is the biologistic technique. It is also called the gene gun technique, mainly used for both plants and animals. Gene gun से या biologistic से हम plants, animals दोनों cells में अपना desired gene insert कर सकते हैं। The biologistic DNA delivery technique involve literally shooting DNA into cells. इसमें हम सेल को बम्बार्ड करते हैं, सेल को हम शूट करते हैं। The DNA is used to coat microscopic tungsten particles known as the microprojectiles, which are then accelerated on a microprojectile by firing a gunpowder charge or by using compressed gas to derive the macroprojectile. हाँ, तो हम इसको मैक्रोप्रोजेक्टाइल से फायर करेंगे या इसको हम कंप्रेस्ड गैस लाइक द हीलियम गैस से हम इसको ड्राइव करेंगे, उससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेशर से हमारे सेल में ट्रांसफर होगा। एट वन एंड ऑफ द गन देयर इज अ स्मॉल अपर्चर दैट स्टॉप्स द मैक्रोप्रोजेक्टाइल बट अलाउज द माइक्रोप्रोजेक्टाइल टू पास थ्रू। व्हेन डायरेक्टेड एट सेल्स, these microprojectiles carry the DNA into the cells and stable transformation will occur. मैक्रो प्रोजेक्टाइल जब हम उसको पुश करेंगे वो वहां पे स्टॉप होगा। जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल जिसमें हमारा डीएनए है, जो टंगस्टन के साथ या गोल्ड पार्टिकल के साथ कोटेड है, वो पास आउट होगा और सेल में ट्रांसफॉर्म होगा। देन इट विल स्टेबलाइज इटसेल्फ इनसाइड द सेल। This gene gun or biologistic technique can also be used to deliver the vaccines. How it is used: firing pin and the gunpowder charge. When we push this gunpowder charge, this is the macro projectile, and the DNA coated with the tungsten or the gold, these are the micro projectile. When we push this firing pin and the gunpowder charge, then the micro projectile will move from this hole and target the cells that are present in the petri dish or in the targets. The macro projectile will stop here and the micro projectile having our DNA will transfer into the cells. So biologistic or gene gun technique is used for the transfer of the gene or transfer of the
vector inside the cell by the gene gull, by the bombardment, and the DNA are coated with the tungsten particles or the gold particles. Next technique is the microinjection. Microinjection is a technique used for the transfer of the DNA in both plants and animals. Microinjection mainly used in gene cloning without a vector. जब हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली डीएनए को इंसर्ट करना चाहते हैं, then we use the microinjection. Microinjection involves the use of a very fine needle and inject the DNA directly into the nucleus. Microinjection technique में हमने फाइन नीडल का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली अपने डीएनए को न्यूक्लियस में ट्रांसफर करते हैं, न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं. Microinjection has been used successfully with both plants and animal cells. The cell is held on a glass tube by mild suction and the needle used to pierce the membrane. इस टेक्निक में हमने जो सेल्स होते हैं उसको ग्लास ट्यूब में हम माइल्ड में प्लेस करते हैं और नीडल के जरिए हम उसमें एक pierce करते हैं, सुराख करते हैं मेम्ब्रेन में, then we inject the desired DNA inside the cell. The technique requires a mechanical micromanipulator and a microscope and a plenty of practice. इस टेक्निक की जो खास बात है, इसमें माइक्रोमैनिपुलेटर की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, and it required a great experience for the transfer of the DNA inside the cell. One obvious disadvantage of the microinjection is that this technique is labor intensive and not suitable for primary cloning procedures where large number of recombinants are required. Primary cloning procedure में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये लेबर इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ रिकमेंड्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते. अगर जब हम लार्ज नंबर ऑफ रिकमेंड्स चाहिए तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. However, in certain specialized cases, it is an excellent method for targeting DNA delivery once a suitable recombinant has been identified and developed to the point where microinjection is feasible. तो हम ये वेरी स्पेसिफिक मेथड है जब हमें वेक्टर अवेलेबल नहीं होगा या हमें जो स्पेशलाइज टारगेटिंग करनी है उसके लिए जब हम रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके लिए ये फिजिबल मेथड है माइक्रो इंजेक्शन. Micro injection, the use of the needle in the for the transfer of our desired gene directly into the nucleus, into the cell. Electroporation is also a technique for the transfer of the recombinant DNA. It can be used for bacteria, for plants and animals. We have discussed the electroporation in detail in the transfer of the recombinant vector inside the bacterial cell. Electroporation is also called the electrotransfer or electropermeability. It's a technique in which an electrical field is applied to cells in order to increase the permeability of the cell membrane, allowing chemical, drugs or DNA to be introduced into the cells. Electroporation में हम electric field provide करते हैं, electric shock प्रोवाइड करते हैं सेल को, जिससे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बन जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. दैट कैन इजीली ट्रांसफर अवर DNA or drugs or chemicals. Electroporation is also used in the process of producing knockout mice as well as in the tumor treatment, gene therapy and cell-based therapy. These are different advantages of the electroporation in the molecular biology or genetic engineering. Electroporation used in the transfer of the recombinant DNA inside the host cell. The recombinant DNA that is outside the cell and the plasma membrane having the complete structure. There is no pores in the plasma membrane. When we apply the electric pulse or electric shock to the cell, pores form in the cell membrane and the gene easily enter inside the cell. So electroporation, formation of the pores due to the electric pulse or electric current. जब इलेक्ट्रिक करंट से पोर्स प्रोड्यूस होंगे, डीएनए ट्रांसफर होगा, the transformed gene or the introduced gene now present inside the cell. After the electric pulse, the pores reseal and the gene remains in the cell. जो pores हैं वो reseal out हो जाएंगे और हमारा जो DNA है वो transfer हो जाएगा. So electroporation is very simple technique. It can use for both plants, animals and bacteria also. And provide in the electroporation we provide electric current which form the pores in the plasma membrane and our desired gene transfer. Pores will recede and the plasma membrane will remain inside the cell.
gene remains inside the cell. A recombinant plasmid, a recombinant DNA gene remains inside the cell. ट्रांसफेक्शन इन एनिमल्स, हम ट्रांसफेक्शन को बैक्टीरिया में डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांसफेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू कल्चर्ड होस्ट सेल मीडिएटेड थ्रू केमिकल्स. जब हम कल्चर्ड होस्ट सेल में केमिकल के थ्रू डीएनए को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफेक्शन. तो ट्रांसफेक्शन, चूंकि फर्स्ट टाइम वी हैव यूज्ड द ट्रांसफेक्शन in the bacteria, that's why we can also use the transfection in the bacteria. The introduction of nucleic acid from a different cell types can be accomplished using various biological, chemical or physical methods. Chemical transfection of eukaryotic cells. Reagent is combined with the nucleic acid to form positively charged complex. These are steps of the केमिकल ट्रांसफेक्शन. हमने जो भी रिएजेंट हमें इस्तेमाल करना है, जो भी केमिकल हमने इस्तेमाल करना है, उसको मिक्स कर देना है. किसके साथ? न्यूक्लिक एसिड के साथ. जब मिक्स करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कम्प्लेक्स बनेगा. complexes are added to cells, हम उस complex को सेल के साथ ऐड कर देंगे and bind to the negatively charged cell surface via electrostatic interaction. चूंकि जब हमने complex बनाया वो पॉजिटिव चार्ज है, अब जो सेल है वो कौन सा, वो कैसा चार्ज होगा? वो नेगेटिव चार्ज होगा. तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सरफेस के साथ बाइंड करेंगे. जो complexes हैं वो bind to the negatively charged surface of the cell by electrostatic interactions as positive to attract the negative. Cells internalize complexes via endocytosis into membrane vesicle known as the endosomes. अब सेल जो सरफेस के ऊपर जो कम्प्लेक्स मौजूद है, जो इंटरेक्शन के बाद जो सरफेस के साथ अटैचमेंट हुई है, उस जो अटैचमेंट है सरफेस के साथ, उसको इंटरनलाइज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस एंड इट विल फॉर्म द एंडोसोम. रिएजेंट डिस्टेबलाइजेस एंडोसोम मेम्ब्रेन. जो रिएजेंट्स है वो एंडोसोम मेम्ब्रेन को डिस्टेबलाइज कर देगा. जब एंडोसोम मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज होगी, देन complexes escape from the endosome and releases nucleic acid cargo in cytoplasm. इसमें siRNA, microRNA or the large RNA are generally active in cytoplasm. DNA must localize to the nucleus where gene expression cassette is transcribed. अगर हमने RNA ट्रांसफर करना है तो वो साइटोप्लाज्म में उसको हमने रिलीज आउट कर देंगे. अगर DNA को ट्रांसफर करना है तो DNA must reach the nucleus because the transcription process always occur in the nucleus. Chemicals that are used in this technique, chemical-based transfection, are the calcium phosphate, polycations, and liposomes. Are more current technologies such as the cationic lipids, polymers, dendrimers, and nanoparticles. These are the particles in with which we can combine our desired target, desired gene, DNA, and RNA for the transfer inside the cell by using the transfection process or transfection technique. Chemical based transfection, there are different types of material that can be inserted inside the cell. It may be the large RNA, it may be the plasmid, or it may be the small interface RNA or microRNA. We mix or we combine our these components जो भी हमने ट्रांसफर करना है, mix with the transfection reagent. After the mixing with the transfection reagent, it forms the transfection complex having the positive ions. Then this transfection complex is fused with the cells. The transfection complex has the positive charge and the cell has the negative charge, and electrostatic interaction will develop. दोनों में electrostatic interaction develop होगा. जब positive charge negative charge के साथ bind करेंगे, then the cell engulf this transfection complex by the process of the endocytosis and form a structure that is called endosome. अब endosome में हमारा जो desired मटेरियल है, प्लाज्मिड है, आरएनए है या डीएनए है, वो मौजूद है. अब साइटोप्लाज्म में ये एंडोसोम होगा डिग्रेड. दिस एंडोसोम विल डिग्रेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड आवर डिजायर्ड कंटेंट्स विल रिलीज. either it may be the DNA, either it may be the RNA. अगर वो RNA है तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगी. अगर वो DNA है then it will transfer inside the nucleus, जहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन भी हो सकती है, जहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स. सो वी have transferred our desired component inside the cell by mixing or by combining our desired gene with the transfection reagent, and after forming with the transfection complex, then endosome will form, and then the desired component will release inside the cell and has been transferred inside the cell. Direct transformation in animal cells.
For transforming the mammalian cells, it is necessary to precipitate the DNA with calcium phosphate and mix the cells to be transformed. Calcium phosphate हम treat करने हैं. It is also the process of transfection. DNA molecule passes through cell membrane and integrate randomly with mammalian chromosomes. DNA molecule है वो cell membrane को pass करते हुए chromosome में integrate करेगा. Precipitation of DNA onto the animal cell. Calcium phosphate solution. DNA precipitated onto the cell surface. हमने calcium phosphate solution में DNA को जब cell surface पे precipitate किया, monolayer of the animal cell है, it can easily transfer inside the cell by using calcium phosphate mediated entry. So it is also the transfection, लेकिन इसमें इस्तेमाल किया हुआ calcium phosphate हुआ और direct transformation into the animal cell हुई. Liposome mediated transfer. Liposome is also the transfection process, fusion with the DNA containing liposome. अब यहाँ पे हमने अपने जो डिजायर जीन है उसको हमने पैक करना है लिपिड कंटेंट्स में. जब लिपिड कंटेंट्स में हमने उसको इनक्लोज किया, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लिपोसोम. नाउ दिस लिपोसोम हैव आवर डिजायर जीन एंड दिस इज द एनिमल सेल. इसके सामने क्या कर देना, लिपोसोम को फ्यूज कर देना. जब लिपोसोम को हम फ्यूज कर देंगे, लिपोसोम के फ्यूजन के बाद एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये हमारा डीएनए एंटर हो जाएगा. एंटर होने के बाद वहां पे रप्चर होगी और हमारा जो डिजायर जीन है वो रिलीज आउट होगा एंड दिस रिलीज आउट डिजायर gene or DNA will fuse in the chromosome of the animal, so we can transfer our desired gene by using the liposome mediated entry or liposome mediated transfer. Animal viruses can also use for the transfer of genes in animals. प्लांट्स वायरस कैन आल्सो यूज, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एनिमल वायरस को हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करें, प्लांट्स वायरस को प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे. A variety of animal viruses are known to transfer genes in animals. For example, simian virus 40, adenovirus, retrovirus, and vaccinia virus. These are the viruses that can be used as a vector for the transfer of gene of interest into the animal cell. These viruses can increase the efficiency of animal cell transformation if they are used as a vector. हम इन viruses को as a vector के तौर पर इस्तेमाल करें, then we can easily transfer our gene of interest into the animal cell directly. Virus mediated entry of the gene of interest. In this technique, we use virus as a vector. The cells that is going to be manipulated or that is going to be altered, harvested from the patients. Then in lab virus altered so it cannot reproduce. हम virus को mutate करेंगे ताकि वो reproduce ना करे, disease cause ना करे. Now after the mutation we enter our gene inside into the virus. हम अपने gene को virus में insert करेंगे. Now this structure may also be called as the virusome. जब हमने virus के gene को मुकम्मल तौर पर उसके DNA को मुकम्मल तौर पर रिलीज या उसको निकालने के बाद अपने जीन इंसर्ट ऐड किया तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वायरोसोम. अगर लिपिड स्ट्रक्चर में हमने इनकोड किया अपने डीएनए तो दैट इज कॉल्ड लिपोसोम. अगर वायरस में इनकोड किया तो वो वायरोसोम. अल्टर्ड वायरस मिक्स विद द पेशेंट सेल. हम अपने जो अल्टर्ड वायरस था, म्यूटेटेड वायरस था जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है उसको पेशेंट सेल के साथ मिक्स किया. आफ्टर दैट सेल बिकम जेनेटिकली अल्टर. चूंकि इसमें हमारा जो डीएनए है वो उसने सेल के जो होस्ट सेल है, जो पेशेंट सेल है उसके साथ उसके क्रोमोसोम में अपने आप को इंटीग्रेट किया. नाउ दिस सेल इज द जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स. अल्टर्ड सेल्स इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट्स बॉडी. उसको हमने पेशेंट बॉडी में दोबारा इंजेक्ट किया. After that, the altered cells produce desired protein. चूंकि ये cells alter हो चुका है, mutate हो चुका है, इसके पास desired gene आ चुका है, then it can produce the desired protein. So virus can be used in the transfer of the gene in the animals. Mainly it is used in the gene therapy. Mainly it is used in the transfer of the genes that can be used for the expression of a specific protein. Embryonic stem cell method. It is a transformation of the whole organism. इससे पहले हमने जो मेथड डिस्कस किए वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिंगल सेल है. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. Stem cells are undifferentiated cells that have the potential to differentiate into any type of cells. स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो जाए. Somatic cell and germ cells में भी जाए and therefore to give rise a complete organism. So somatic cell can produce a complete organism.
There are two methods that used in the transformation of the whole organism are embryonic stem cell based methods. हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए इंसर्ट किया. आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द डीएनए वी सिलेक्ट फॉर सेल्स एक्सप्रेसिंग द डिजायर जीन. उन सेल को हमने सेलेक्ट करने हैं जिनके पास हमारा डिजायर जीन मौजूद है. देन इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू द इनर सेल मास. हमने उसको इनर सेल मास में इंजेक्ट किया. जो ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास है उनमें अपने जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उनको हमने इंजेक्ट किया. आफ्टर दैट इम्प्लांट दैट सेल इनटू द यूट्रस, दैट्स द फॉस्टर मदर. उसके बाद जो हमारा जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्रोपोगेट होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे, उससे हमारा जो डिजायर कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस होंगे. सेकंड मेथड है कि फर्टिलाइज एग में हमने जो प्रो न्यूक्लिया है उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर जीन को या जो वेक्टर है उसको हमने क्या कर देना है, इंजेक्ट कर देना है. आफ्टर द इंजेक्शन इन द फर्टिलाइज एग इम्प्लांट इन द यूट्रस, जब यूट्रस में प्लांट करेंगे वो वहाँ पे उसमें फर्टिलाइज उसकी जो डेवलपमेंट होगी और उससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे. देन वी टेस्ट ऑफ स्प्रिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ जीन. तो दिस होल ऑर्गेनिज्म विल change or modified by using embryonic stem cell technique. So we can transfer our desired gene or we can transform the whole organisms by using the gene, by inserting our gene of interest. That's all about the transfer of the desired vector or the gene of interest into the non-bacterial cells, into the plant cell, into the animal cell, or into the yeast cell, Ascomyces cerevisiae. We have discussed different methods. कुछ methods दोनों में combine है, कुछ methods दोनों में specific हैं. जिस तरह protoplast fusion है, protoplast based है, या agrobacterium Tumefaciens है, based transformation हम plants में इस्तेमाल कर सकते हैं, micro injection हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, nucleoplast दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ट्रांसफेक्शन बेस्ड है या जो लिपोसोम है या वायरोसोम रिलेटेड जो हमने या एम्ब्रियोनिक स्टेम से रिलेटेड जो मेथड डिस्कस किए, दैट आर स्पेसिफिक विद द एनिमल्स. In the next lecture, we will discuss about the selection and screening of our desired vector inside the host cell. Thank you so much.